हेलो एवरीवन। लास्ट हम पढ़ रहे थे रिलेशन फंक्शन, 2 लेक्चर कर लिया था हमने। ये था हमारा थर्ड लेक्चर है। और जो थर्ड लेक्चर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे रिफ्लेक्सिव, कुछ रिलेशंस देखा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस देखा था, उसमें जब तीनों अकर करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। राइट, लेट ए, एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन आर स्क्वायर। राइट, एक 2 डायमेंशनल में कोई ट्रायंगल है। राइट, आर एक रिलेशन में डिफाइन किया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 belongs to a into a such that डेल्टा 1 is congruent to डेल्टा 2. right, डेल्टा 1 is congruent to डेल्टा 2. तो आर एक हमारा रिलेशन है, तो इसका फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, आर सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो, डेल्टा इफ डेल्टा 1 congruent to डेल्टा 2, this implies डेल्टा 2 will also be congruent to डेल्टा 1. राइट, तो अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो डेल्टा 2 भी डेल्टा 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दिस विल बी सिमेट्रिक। सेकंड, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। अपने आप से तो हर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सो आर इज, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। राइट, और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। सपोज डेल्टा 1 डेल्टा 2 belongs to R and डेल्टा 2 डेल्टा 3 belongs to R. राइट, तो यहाँ से डेल्टा 1 डेल्टा 2 belongs to R करने का मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज डेल्टा 1 congruent to डेल्टा 2. राइट, if and डेल्टा 2 डेल्टा 3 belongs to R, this implies डेल्टा 2 congruent to डेल्टा 3. राइट, तो अगर डेल्टा 1 congruent to डेल्टा 2 है और डेल्टा 2 congruent to डेल्टा 3 है, दिस इंप्लाई डेल्टा 1 is congruent to डेल्टा 3. राइट, so डेल्टा 1 डेल्टा 2 3 belongs to R. right, therefore R is an equivalent relation. एक और एग्जांपल देखते हैं, A equal to triangle such that triangle is a 2-dimensional triangle. R equal to डेल्टा 1 डेल्टा 2 belongs to A into A such that डेल्टा 1 is similar to डेल्टा 2 by the same proof जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में किया है, बस सिमिलरिटी में होगा। R is an equivalence relation. Same proof as in the previous example. एक और एग्जांपल देखते हैं, let A equal to A such that A is a finite set. A finite set है, define R on A as follows. एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R A में, such that A B belongs to R if number of elements in A is equal to the number of elements in B. right,
belongs to R if number of elements in A is equal to number of elements in B. तो R क्या होगा? A B belongs to A into A, so that number of A equal to number of B, right? Let A B belongs to R. This implies number of A equal to number of B. तो number of A number of B का है तो B के इक्वल है तो number of B भी number of A के इक्वल होगा, right? This implies B A belongs to R, right? So R is symmetric. यहाँ R symmetric prove हो गया. Second case, let A be a finite set. Number of A should always be equal to number of B. A क्योंकि A के इक्वल ही होगा. This implies A belongs to R. So R is reflexive. Third case, let A B belongs to R and B C belongs to R. A B belongs to R. This implies number of A equal to number of B. Similarly, B C belongs to R. This implies number of B equal to number of C, right? ये question 2 हो गया. So by 1 and 2, we can say that number of A is equal to number of C, right? So R is transitive. So R reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया, transitive भी हो गया. So R is an equivalence relation. R equivalence relation हो गया. एक और एग्जांपल देखते हैं. A equal to R square 0 0 punctured plane. तो प्लेन है. punctured plane एक R रिलेशन डिफाइन करते हैं. इससे हम x1 y1 x2 y2 belongs to A into A such that there exists a non-zero scalar lambda belongs to R such that x1 y1 equal to lambda x2 r2 y2, right? एक रिलेशन हमने डिफाइन किया x1 y1 और x2 y2 में. तो एक नॉन जीरो स्केलर लैम्डा होगा x1 x2 such that x1 x2 equal to lambda times x2 y2, right? तो अब हम चेक करेंगे हर कंडीशन का. फर्स्ट कंडीशन, लेट x1 y1 x2 y2 belongs to R, right? There exists lambda not equal to 0 belongs to R such that x1 y1 equal to lambda x2 y2. तो लैम्डा को अगर इधर कर दे तो 1 by lambda x1 y1 to x2 y2, right? x2 y2 क्या हो गया? x2 y2 equal to 1 by lambda x1 y1. तो देखो x1 y1 x2 y2 belongs to R था. तो यहाँ से ये भी हो गया x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 belongs to R, right? तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया. R is symmetric. सेकेंड केस देखते हैं. Let x1 y1 belongs to A, right? तो x1 lambda 1 अगर lambda 1 ले लेते हैं तो x1 y1 is equal to 1 into x1 y1, right? lambda 1 आ गया. So x1
y1 comma x1 y1 belongs to R, right? So R is reflexive. R reflexive भी हो गया. अब थर्ड ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. तो लेट x1 y1 comma x2 y2 belongs to R and x2 y2 comma x3 y3 belongs to R. तो यहाँ से देखते हैं. अगर x1 y1 comma x2 y2 belongs to R है, so there exists lambda not equal to 0 belongs to R such that x1 y1 equal to lambda x2 y2. First equation. Similarly, x2 y2 x3 y3 में belongs to R, so there exists beta not equal to 0 belongs to R such that x2 y2 is equal to beta times x3 y3, right? Question 2 हो गया. So by 1 and 2 से क्या कंडीशन आ गया? x1 y1 is equal to lambda x2 y2, right? तो x1 y1 is equal to lambda beta x3 y3, right? ये आ गया. This imply x1 y1 x3 y3 belongs to R. So R is transitive, right? This implies R is an equivalence relation. तो R equivalence relation प्रूव हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन. पहले डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन का. A function f from a non-empty set A to a non-empty set B is a relation from A to B with the following properties. सेट ए से सेट बी में फंक्शन जो है एक रिलेशन होगा विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए. डोमेन ऑफ एफ ए होना चाहिए. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? whenever a1 b1 belongs to f and a b1 belongs to f and a b2 belongs to f, this imply b1 should be equal to b2 होना चाहिए. तब ये फंक्शन होगा. ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो गया फंक्शन होगा. बेसिकली ए से बी में अगर कोई रिलेशन है ए बी, इधर में ईच होना चाहिए, इधर में यूनिक. इसमें हर एक वैल्यू के लिए कोई एक वैल्यू उधर होना चाहिए और उधर में एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए. कोई भी एग्जांपल देखते हैं. ए कोई सेट है -5 -3 -2 0 1 3 5, राइट. बी है 1 2 4 9 16 24 30, राइट. ए और बी का ऐसा सेट है, राइट. तो बी टू ए में देखते हैं. बी सेट है और ये ए सेट है, राइट. ऐसे बी सेट ए सेट 1 2 4 9 16 24 30, राइट. बी में इतने एलिमेंट्स हैं और ए में -5 -3 -2 0 1 3 5, राइट.
तो यहाँ से देख लेते हैं 4 -2 से अगर रिलेटेड है, 4 -2 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 9 -3 और 3 दोनों से रिलेटेड है, 9 -3 और 3 दोनों से रिलेटेड है। तो ये फंक्शन क्या आ गया हमारा, ऐसे बी ए बिलोंग्स टू बी इंटू ए सच दैट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो 2 16 24 30, देखो 2 16 24 30, इधर ईच होना चाहिए, इधर यूनिक होना चाहिए, राइट। यूनिक तो है इधर, लेकिन इधर ईच नहीं है, क्योंकि 9 के पास 2 एलिमेंट्स है और 2 16 24 30 के पास कोई एलिमेंट नहीं है। 30 डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए कोई सेट है, 1 2 3 4 5 6 सेट है, राइट। एक रिलेशन आर है, ए टू बी बिलोंग्स टू ए इंटू ए such that b is equal to a plus 1, right? Domain of R क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट। 6 नहीं होगी, 6 में एलिमेंट नहीं है, ये नॉट इक्वल टू ए, तो कंडीशन ऑफ द डोमेन ऑफ एफ शुड बी ए। सो मतलब ईच एलिमेंट नहीं आ रहा, ईच एलिमेंट का वैल्यू दूसरे रिलेशन में नहीं आ रहा है, सो आर इज नॉट अ फंक्शन, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ सच दैट एफ आर टू आर f equal to xy such that y is equal to x square, right? Domain of f equal to r. Suppose xy1 is equal to xy2, right? So xy1 belongs to f. This implies y1 equal to x square, and xy2 belongs to f. This implies y2 is equal to x square. This implies y1 should be equal to y2, right? तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, so f is a function. f is a function, right? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नोटेशन। फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे f at a to b is a function that is the relation f is a function from a non-empty set A to the non-empty set B, then AB is denoted as B is equal to function of A, right? तो फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, f से if a to b is a function that is a relation f is a function from a non-empty set A, non-empty set B, then AB is denoted as B is equal to f of A. Range of function, suppose f a to b is a function, range of f is equal to b belongs to b, that b is equal to fa, right? ये ऐसे रेंज को डिनोट करते हैं, range of f will be b which belongs to b such that b is equal to function of a, right? Example, f
आर टू आर एक फंक्शन है, राइट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा? y belongs to r such that y is equal to y greater than equal to 0, right? Let y belongs to r with y greater than equal to 0. Let us assume that y greater than y. Let us assume that y not equal to 0. This implies y greater than 0. हमने assume किया कि y 0 के इक्वल नहीं है, so y greater than 0 होगा. This implies there are exactly two square roots. Roots of y, namely plus root y and minus root y, right? Let x is equal to plus root y. This implies y is equal to x square, right? अब नया एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा. f such that z f z to z में एक फंक्शन है fn is equal to n plus 1, right? एक फंक्शन है. रेंज ऑफ f is equal to z. Let m belongs to z. Let n is equal to m minus 1. This implies fn is equal to n plus 1. n m minus 1 है, fn n plus 1. तो इसको लिख सकते हैं m minus 1 plus 1, right, is equal to m. Thus range of f is equal to z. f r to r, right? fx is equal to x. Identity function. Types of function में पढ़ रहे हैं. Types of function. fx is equal to x है, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन. इसका ग्राफ कैसे होगा? y equal to x का, y is equal to x, x एक्सिस y एक्सिस. आइडेंटिटी फंक्शन का हो गया. तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बेसिक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, y एक्सिस x एक्सिस, राइट. तो ये आ गया y एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. थर्ड आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2. तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया. और फोर्थ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा? डोमेन of f is equal to r, range of f equal to y belongs to r such that y greater than equal to 0. तो इसका ग्राफ कैसे होगा? y एक्सिस. मॉड x क्या होगा? x when x greater than equal to 0 minus x when x less than 0, right? एक और बनाते हैं 5. fx is equal to x cube. डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ f is equal to r, range f is equal to r, right? x axis y axis. ये हो गया. एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप देखते हैं y is equal to e to the power x, right? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन x belongs to r, रेंज क्या हो जाएगा? y greater than 0, right? और ग्राफ कैसे हो जाएगा? y की पावर x का ऐसे इंक्रीजिंग, राइट. ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, राइट. अब log x का देखते हैं. y is equal to log x, राइट. तो log x का ग्राफ है या ln x का ग्राफ देखते हैं. y एक्सिस x एक्सिस,
ये वाला क्या है 10, log 10 होता है ना। तो ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया। कल नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, 1 फंक्शन 1 2 फंक्शन। उससे पहले हम कुछ और प्रूफ देखेंगे। So let's meet in the next class. Thank you.